Pa 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 pa. Ay. वो कहाँ से आता था भाई काउंटडाउन? Well, on me. Welcome back, chat. Welcome back. We are streaming again, and interesting times. Interesting times are here, chat. मेरे को लगता है अब सीजन क्योंकि आ रहा है क्रंच टाइम में these are the last few games of the season. पता नहीं मैं अभी ना कुछ अगेन मैं vulnerable नहीं होना चाहता चैट. I don't want to be vulnerable to outside influences और जो लोग मेरे पीछे पड़ते हैं उससे भी. You know, it gets to me sometimes. Sometimes I feel like I'm not enough. पर चैट अगर तुम्हें याद होंगे वर्ल्ड कप वाले दिन तो वैसे ही फीलिंग आ रही है कि कहानी लिखे जाने दो. वेलकम बैक भाई टू द स्ट्रीम. थोड़ा वियर्ड स्टार्ट बट कोई नहीं. लेट ओपी पशु भाई ऑन टाइम रिप्रेजेंटिंग यशेस फ्रेंडशिप ऑन टाइम भाई. रोहन दहाल. मिस्टर आरएस हाउ आर यू? अनुज भाई यू आर टू काइंड मैन. चौंकी सोसान फिटनेस दिस गाय मैन. मिस्टर ए फॉर मार्शल भाई. मिस्टर दक्षता क्या ट्वीट डालते कहते नीडेड टू गेट ऑफ द इंटरनेट एनीवे भाई. दैट्स फनी. आई डोंट नो भाई. मिस्टर दक्ष हैज हिज आयरिश ह्यूमर. आयरलैंड में ही रहते हैं ना मिस्टर दक्ष. आई डोंट नो शायद आयरलैंड में रहता है या जहां भी रहता है. ही हैज हिज वे. आई फील इट भाई. आई फील इट. इट्स अ नाइस गाय. मिस्टर दक्ष यू नो व्हाट. रुक जाओ. अगर फ्री हो तो स्ट्रीम पे आ जाओ. आज आपकी पिटाई करता है. पहले बता देना आप हो भी कि नहीं. मतलब चैट पे बता देना. क्योंकि भाई आपके जैसा कूल कैसे बना भाई. ओसान इफ यू थिंक आई एम कूल मे बी something's wrong. I'm not cool bro. I'm not cool. If I was cool I wouldn't be where I am. चौंकी क्या भाई. ऋतिक hey did you catch me IRL भाई. Did you catch me IRL? जयंत तुम बैक. करमजीत. यश रावत. चलो शादी कर लो. टीन लव स्टोरी. It is send. Okay, let me send you. You know what chat आज माहौल बिठा देते हैं भाई. दो बंदे लाके माहौल बिठा देंगे भाई. बड़म पम पम बड़म पम पम बड़म पम पम बम लहरी. सारी दुनिया हिला के तुमको बने कल तो बहुत नोटी हो रहा था. अरे भाई कम ऑन भाई. यू चैट. You know what? Let's calm down भाई. Let's calm down. You know what? Let's calm down. चैट मेरे को जेन्युइनली बता रहा हूँ. तुम्हें नहीं लग रहा है जिन काजामा वाला हेयर स्टाइल? तुम्हें पता ना जिन काजामा. इट्स द टेकन वाले बंदा. मेरे को लग रहा है भाई चैट ये. और मैंने कुछ कट नहीं कराया चैट. आई जस्ट लेट देम ग्रो और ये खुद हो रहा. आई थिंक समथिंग्स कुकिंग भाई चैट. लुकिंग गुड चॉन्ग्स. थैंक यू संकेत भाई बट आई नेवर लुक एज गुड एज यू. चॉन्की यू आर माय गोट भाई. डेविड बेकम यू आर माय गोट मैन. ये चॉन्की लॉन्ग टाइम नो सी भाई. शुभम यू हैवंट पुल्ड अप टू द स्ट्रीम. यू हैवंट पुल्ड अप टू द स्ट्रीम मैन. व्हाट द हेक. भाई शुभम hasn't been pulling up to the stream भाई. What the heck? What the heck man. 12 भटूरा. So यार मिस्टर सादिक का वो लेना पड़ेगा व्हाट्सएप. I have lost the contact. भाई when will Gavi be back भाई? No idea. I think वैसे वो उसने आज कुछ डाला था पोस्ट. I think he's back training वगैरह कुछ like pitch पे आ गया but it will obviously take time. Anujar I'm doing fine. I'm going day by day. I'm making moves. Will the Bhallatis return at the Euros? भाई क्या भल्लाती रिटर्न करेंगे यूरोज में भाई? दैट्स अ क्वेश्चन आई कैन नेवर आंसर. भाई यूनाइटेड मैच देखा नहीं यार मैंने. पर मैं ऑनेस्टली पता है बिफोर आई टॉक अबाउट एवरीथिंग फुटबॉल इंटरेस्टिंग चीज है. मैं तुम्हें बता रहा हूँ. दिस इज द काइंड ऑफ
नुआंस लोग लोग मिस करते हैं व्हेन टॉकिंग अबाउट लाइक इंडिविजुअल एक्शंस। बहुत इंटरेस्टिंग गोल था अमाद डियालो का, और बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन हुई थी मेरी ट्विटर पे ही। भट्ट सुजान करके एक बंदा है, ही फॉलोज मी ऑन, क्या कहते हैं, ही फॉलोज मी ऑन ट्विटर। उस बंदे के साथ बातचीत थी, और वो था जो उसका पास था। अब चैट खुद बताओ, उस उसका पास नहीं, बट इन जनरल उसका डिसीजन था, जो क्या नाम है यार उसका, गर्नाचो का, ऑन दैट अमाद डियालो गोल। अब पता है क्या है, बहुत लोग कह रहे पास उतना अच्छा नहीं था, क्योंकि पास थोड़ा वो था, लाइक शॉर्ट था, और थोड़ी पावर हो सकती, वेट उतना अच्छा नहीं था, थोड़ा अंडर वेट था पास। लेकिन भाई वो उस गोल में जो अमाद डियालो का टच था, क्योंकि फॉर श्योर उस पोजीशन से अमाद डियालो कुड नॉट हैव लाइक वो जो सेपरेशन चाहिए थी ना, अगर वो स्ट्रेट लेता, इफ ही वुड हैव ट्राइड टू गो स्ट्रेट और वो सेपरेशन का ट्राई करता, इम्पॉसिबल था, वो हो ही नहीं सकता था। डिफेंडर ने सही रीड किया था, डिफेंडर ने परफेक्टली, इट वाज अ परफेक्टली डिफेंडेड काउंटर, परफेक्ट, नो मिस्टेक देयर। पर जो उसने टच है भाई, वो इतना अन, भाई तुम्हें नहीं पता भाई डियालो, आई डोंट नो व्हाट यू गाइस आर वाचिंग, मैंने डियालो को देखा था अभी उसके लोन पे भी, एंड आई नो वन थिंग, व्हेन अ प्लेयर इज गुड ही इज गुड, एंड दीज आर द काइंड ऑफ ऐसे छोटे छोटे टेक्निकल actions that make you that good player। भाई डियालो इज अ ग्रेट player। वो जो टच था भाई, तुम समझ नहीं रहे चार्ट, यू डोंट यू, तुम्हारी प्रॉब्लम है यू डोंट डीप इट, उसका टच लिटरली परफेक्ट था उस पोजीशन पे। भाई वो दैट वाज जीनियस, सम जीनियस प्ले, आई लव्ड इट। लंगूर्स कब, लंगूर्स के बारे में पूछ लिया भाई, इग्नोर करेंगे भाई ये क्वेश्चन। हेलो फ्रॉम नेपाल फुटबॉल मैडनेस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग ऑन स्ट्रीम। चौंकी स्ट्रीम थोड़ा लैग कर रहा था पहले, नाउ इट्स फाइन भाई। चार्ट ये बताना भाई अब, यार वो वाईफाई का साइन नहीं आ रहा, यूजुअली क्या होता है लैग होता है, तो दैट्स व्हाट कम्स अप ऑन द स्ट्रीम। भाई आई नो Felix loses the ball a lot and his decision making is not great, but he has good moments in him and only earns 400K a year, and honestly I won't mind him on loan next year too। भाई लोन अलग चीज है, पर वही बात है, आई डोंट वांट टू honestly pay for him। valuable content, thanks you bro, love, thanks a lot भाई करमजीत, means a lot, makes my day। Felix better than 60 million flop। भाई तुम्हें लग रहा है रफीनिया से भाई, कम ऑन भाई चार्ट, 5,000 डॉलर एग्जैक्टली भाई, एग्जैक्टली। आई आई मिस्टर दक्ष इज बैक ऑन माय से, एक सेकंड भाई रुक जाओ। मिस्टर दक्ष, मैं आपको, हाउ डू आई एड्रेस यू मिस्टर दक्ष, मिस्टर दक्ष ठीक है व्हाट यार। डू यू लाइक टू, इट इज मिस्टर इट, दक्ष। अरे व्हाटएवर यू वांट टू से आउट ऑफ लव मैन, सब चलेगा सब चलेगा। हाउ आर यू चौंकी? भाई मिस्टर दक्ष, यू नो आई एम कुकिंग, आई हैव बीन कुकिंग लेटली, आई एम डूइंग गुड फॉर माय सेल्फ। You are cooking, that is for sure. Perfect cook आप sesh बताओ yaar, आपकी कैसे perfect चल रही cook। है पढ़ाई वगैरह। Bhai, I am in the trenches, man. I haven't touched any study material today. Aaj I will stay on stream for a bit, and then उसके बाद आज देर रात तक पढ़ाई होगी भाई। We have to, we ग्राइंड, have to भाई, we have to salvage this season today. या भाई चार्ट, तभी मैं बोलता हूँ भाई पढ़ाई लिखाई कर लो भाई, कुछ करना है मिस्टर दक्ष की तरह, इफ यू वांट टू मेक समथिंग। भाई और पता है इंटरेस्टिंग है, बहुत लोग Hmm. स्पेशली आजकल ये ग्लोरीफाइड है लाइक इन टर्म्स ऑफ कंटेंट क्रिएशन। मैं Hmm. वो देखता हूँ लाइक, आई थिंक इट्स लाइक बहुत सारे ऐसे आजकल तुमने देखोगे वो आते हैं फिटनेस इन्फ्लुएंसर वाले, और इट हैज बिकम कि तुम ये करना, इज बिकम कि कुछ कर दिया बस, ड्रॉप शिपिंग कर दी तुमने, कंटेंट बना दिया तुमने, ये कर दिया। Hmm. आई थिंक हम एक मतलब एंटरप्रेन्योर, मतलब क्या बोलते हैं इसे, Grind set. एंटरप्रेन्योरशिप, इट्स Grind. गुड। हाँ ये Grinding. ग्राइंड सेट ही अच्छा है, हाँ. बट भाई यू गाइस आर डूइंग एनी लाइक ऐसे, मेरे को लगता है मोस्ट ऑफ इट इज कुछ भी वैल्यू शिट नहीं है, लाइक इट्स नॉट अ ग्रेट वैल्यू एडिशन। यूट्यूबिंग ऑल ऑफ दिस इज गुड, डू इट, बट मैं वो कह रहा हूँ जो तुम पढ़ोगे, जो तुम समझ लो थिंग्स यू कैन एक्चुअली, मे बी यू कैन डू समथिंग ग्रेट, तो Hmm. कीप स्टडिंग भाई। No, at some level, what you say makes sense. Yeah, it's the thing is this. Like, I know people who went to college with me undergrad में, CS में, they were super good. Like, I was an average CS student. Huh? They were super good. भाई मैं भी Ended up सेम, working at प्रॉब्ली बिलो एवरेज। who me? मैं You same brother. I trust me. If you knew my CS, you'd be like same ही है. But most people ended up working at Microsoft. Worked there for 6 years. Quit. And yeah,
the thing is this, I understand your point about YouTube and all of these things, but innately ना humans just love creation, dude. We until True, तुम true. लोग कुछ create नहीं करते हो ना अपने हाथों से, whether it's art, music, dance, write something, create videos, अपना वो यार, we end up getting more and more frustrated. Which is why, man, like these guys who have these high cushy jobs, they take a 6 month Hmm. sabbatical, go to another country, find themselves. What is finding themselves? They'll end up doing pottery with Hmm. some other people and stuff like that. Yeah, Mr. Mohak is also here in the chat, bhai. Yeah, hey, Mr. Moore, let's not do this here. Let's not do this on the chat, bhai. Why is he Nice, doing this man. on the chat, bhai? That nice. I was like, you commented at a time, and I was like, damn. And then she didn't reply, and I was like, tears. They're trying to hype up Chonky niche because everyone was like Lambo, Hey, Lambo, वो and she saw actual it. पता नहीं आप if you have paid attention, it was an actual bar says this is the agenda we have tried, like this is what we have settled on. क्योंकि सारे young players है, we have decided कि Barca is mid, that is the like energy we'll give out to the world. वो actually innocent, actually it was from like the bottom of my actual comment था, मतलब it wasn't supposed to be but it was made to be. और फिर उसके बाद भाई बंदे शुरू हो गए शुरू and हो I गया. was like भाई let's Hmm. let's have fun. I It was was just good भाई. thinking, like, I think प्रथम ने लिखा था, नहीं, एक somebody else said, कोई कोई इस लड़की को भटूरे वाली कहानी सुनाओ. I was like, अच्छा हाँ bruh, भाई ये भी था. हाँ वो नहीं bruh. भाई. Let's not go there. Yo, what up, Chonks? How are you, brother? And how's your health? By the way, Mr. Daksh, मेरे को ना एक थोड़ा एक डायनामिक प्रॉब्लम है. I remember when I came to your stream, Hmm. you had this good like I liked it. एक ऐसा तरीका usually बाकी सबकी streams में भी होता है of being able to like balance this out. I don't know like chat or chat. Hmm. I'm not good at it. तो कहीं भी लगे तो just Oh, no interject. problem, hero, dude. It's Wait or none of us are pros here. But अच्छा आपने वैसे I to just like the fact that now a lot of people have just like, मेरे को पहले ना guilt होता था. I used to feel guilty that this person is spending 5 minutes of his life typing something to me and wants to say something to me, और मैं उसको ignore कर रहा हूँ. After a point of time, bro, you just realize a lot of people are just not writing things relevant on the screen. मतलब you're हाँ talking ये भी है. about football and then somebody's like, मेरा physics के एग्जाम में कैसे पढूं? And it just हाँ, becomes very jarring when you're talking about Saka का ये aesthetic bias है and all that stuff, and then suddenly you have to tell people कि नहीं, तू magnetism and optics पे focus कर, अभी ये सब छोड़ दे. I just realize, man, like sometimes दुख दर्द पे you will have to like leave people a bit, but it's something you just gather अपने आप, man. क्या ही होता है. ट्रू ट्रू थोड़ी थिक स्किन बनानी पड़ती है. कल मैंने Yeah, कॉन्की man. से इंस्पिरेशन लेके 6 भटूरे खाए भाई. आदि आप यू आर मिसिंग आउट ऑन 6 मोर भटूरास. पर पता मिस्टर दक्ष, कल आपने तो देखा था शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यू वॉच द यूनाइटेड Oh लिवरपूल yeah, गेम yeah, राइट yeah. भाई. मेरे हिसाब से Hmm. पीपल अब आप इस पे ओपिनियन देना. मिस्टर होक एंड आई हैव फॉट ऑन दिस plenty of times. Hmm. But we just let's talk about Marcus Rashford, MBE. People just don't give him the credit he deserves. Scored again, is always scoring big games, is always there. Is the guy with मजाक भी नहीं कर रहा. He's easily the सबसे ज्यादा threat Hmm. generate करने वाला player in United. Yeah. And people like him. They don't like him, man. They just don't like him. They want to like him. They they're desperate for him to be the player they want him to be, because Carrington, man, you are, if you're from Carrington, if you're one of their own, you're competing with Giggs, bro. The guy was playing till he was 39, 40 for Man United, and that too at a high level. Consistency. Paul Scholes, old age maybe, delivering. Marcus Rashford's biggest strength and biggest weakness is that he is a moments player. In those moments, he can outshine everybody. But the Hmm. problem is now the standards are so high enough, Chonky. Bro, Liverpool have lost 3 games all season in all competitions. भाई And that's look, crazy भाई. भाई that's crazy chat भाई. एक सेकंड भाई. बाहर से कितने हारे भाई. रोना आ जाएगा भाई. 3 games all season, two in the league. One, by the way, through a dodgy VAR decision against Spurs. So actually, they've legitimately lost 2 games all season. And these are the standards. They're not top anymore.
They're not top by goal difference. वैसे These are the बारसा हैज standards आल्सो लॉस्ट 3 गेम्स ओनली, मतलब ला लीगा में all season. एटलीस्ट। हाँ, हाँ, लीग में। Liverpool, yeah, Liverpool have lost 3 all season, 2 in the league, 1 out of a dodgy VAR decision. And मैं वही कह रहा हूँ brother, like Arsenal have lost 4, 6, 7, 7, 8 or 7 or 8 Arsenal have lost this season. These are the standards, man. Like हाँ you could भाई, lose just 2 to 3 games all season and you're not top and आपका ये हो जाता है. They haven't defeated us so 7-11. अभी तो यार I am hoping भाई वो व्हाट डू यू थिंक सलाम अबाउट brother. I आर्सेनल? अब hope Man क्योंकि United. हाँ, नेक्स्ट गेम इज आर्सेनल एंड यूनाइटेड, राइट? Arsenal City. That is. आप तो नहीं देख पाओगे भाई, मिस्टर दक्ष। पता है, मैं Yeah. खुद लाइक लाइक इन क्लब्स स्पेशली जो मैं ऐसे प्रीमियर लीग या दूसरे लीग में सपोर्ट करता हूँ, उनमें मैं वो ऐसा इमोशन हटा पाता हूँ ना, तो मैं चैन से देखता हूँ। ऑल्दो मेरे Mm. फेवरेट्स होते हैं, लेकिन स्टिल एक एक मजा ही कर रहा था। इन द एंड आई एम एंजॉयिंग रिगार्डलेस ऑफ द रिजल्ट। पर भाई आई कैन इमेजिन, क्योंकि अगर बारसा खेल रही होती जैसे टाइटल डिसाइडर, अनफॉर्चुनेटली टाइटल रेस से बाहर है, लेकिन अगर खेल रहे होते ना एल क्लासिको, मान लो वो टाइटल डिसाइडर होता जो अब आएगा 31st नेक्स्ट, fourth. हाँ. भाई मुश्किल होती भाई देखने में। आई रिमेम्बर लास्ट सीजन जो 1-0 जीते थे हम, Hmm. केसी के गोल पे, 2-1 जीते थे शायद उस पे। भाई वो Hmm. इतना भयंकर, दैट वाज वन ऑफ द हार्डेस्ट गेम ऑफ माय लाइफ। Hmm. सिटी वर्सेस आर्सेनल, मेरे हिसाब से द टू बेस्ट टीम्स इन द वर्ल्ड गोइंग एट इट। Yeah, man, it's going to be a tough watch. We beat City this season, first time after 9 years. 9 years we hadn't beaten them. Um, I don't know, man. Like it's an away game. Stakes are high. We drop points. Both City and Liverpool go above us. We draw. Liverpool go above us. We win. We have some daylight. Well, हम्म, we at least match Liverpool, who will play Brighton at Anfield. ये लोग तो जीत जाएंगे. Yeah, bro. मतलब it's भाई insane दैट्स क्रेजी। the run in we have, but come प्रोजेक्टेड on. पॉइंट्स क्या है? डू यू नो कितने प्रोजेक्टेड पॉइंट्स है तीनों टीम्स के अभी तक? Somebody runs a statistical model online, yeah, and based right now as it is Liverpool and Arsenal on 87 or 86, City on 85. भाई फिर भी दिस इज स्टिल अ थोड़ी कंजर्वेटिव प्रीमियर लीग टेबल। लाइक एटलीस्ट पेप क्लॉप एरा तो वाज लाइक भाई 90 पॉइंट्स के 90 बाद भी plus, नहीं जीत bhai, रहे भाई। 90 plus. That's हाँ। the, yeah, yeah, of course, man. Up to that's the thing, right? It used to be Liverpool, City, and then the rest. Now imagine like if Arsenal wasn't playing the level they are, like we got 4 points of Liverpool this season. If we weren't playing, it was 6 points to Liverpool. Liverpool would be 6 points ahead right now on 70 points. Same with City, हम्म, would have been 3 points ahead. Aage. This time, I think 3 teams aage hain. They're just taking points of other teams, and Arsenal have taken points of Liverpool and City this season. So, इस साल I think थोड़ा सा it's not going to touch 90 plus, but still a hyper competitive one, man. I think after 8 9 years, बहुत we're seeing a 3 horse race in the Premier League. सही में काफी भयंकर है। एंड इफ यू डीप इट अभी, अब जैसे लाइक एस्टन विला वगैरह, उनका सीजन स्टार्ट इतना इतना स्ट्रांग था, इवन टॉटनहम, फिर वो Hmm. इंजरीज वगैरह हुई हैं तो वो हो गई, वरना मेरे हिसाब से दिस टेबल वुड हैव लुक्ड इवन डिफिकल्ट। लाइक अभी तो जैसे 87 पॉइंट्स तक जा रहे हैं, Hmm. मेरे ख्याल से उससे कम होते हैं अगर एवरीथिंग वुड हैव बीन जैसा। आर्सेनल उतना अच्छा नहीं खेल रही जितना वो Hmm. स्टार्ट में थे, सेम विद टॉटनहम। Hmm. तो वो अगर वो उनका भी वैसा चल रहा होता, यूनाइटेड का भी ऐसा ऊपर नीचे है, Yeah, तो बहुत वो होता। if Spurs had won their game against Fulham, they'd be 7 points. I know 7 points बोलने में अब बड़ा लगता है because like I said, the standards are like that. हम्म, But 7 points with 10 game weeks away from third, can't even write that off, man. 7 points तो कुछ भाई भी नहीं हाँ, है. एक दो गेम में हो जाता है भाई, हाँ। मतलब ट्रू भाई। and Spurs had to play us, have to play Liverpool, have to play City. If they'd beat like two of them, they're in the mix anyway. So like बहुत है यार, competitive है. It's a very competitive league right at the top of the table. आज bottom में भी change हो गया. One of the teams, Nottingham Forest, got a point deduction, 4 point deduction today, भाई ये for तो FFP. वो So हो रहा now है they are in the करप्शन। relegation zone. कितनी करप्ट लीग है भाई मिस्टर दक्ष, प्रीमियर लीग बड़ा It's not करप्ट लीग है corrupt भाई। league, brother. It's इट्स अ करप्ट enforcing the लीग भाई। तीन, rules. एक सेकंड, एवर्टन को हो चुका, ये नॉटिंघम Yeah, फॉरेस्ट को हो रहा because है, सिटी they पे broke the rules. 116। They broke the rules. They spent too much. They gambled. भाई वी नीड Eh, टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन, प्रीमियर लीग
Corruption. Let's It's not promote corruption. La It's Liga not by corruption. everybody. It's corruption. Corruption पे सिर्फ एक क्लब के चार्जेस हैं 115 वाले. That is full fraud. ये वाला तो overspending है. They've just spent beyond their limits, and now they're getting punished for it. It's just instead of a transfer ban, instead of a whatever embargo, they've said nahi bhai, you will deduct points. That's it. Because bro, like even Chelsea were trying to do this, man. They thought क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा 30 million का fine हो जाएगा. We'll take it as a cost of business opportunity, whatever. Hmm. Now there's deductions, and now they're absolutely sweating. Because if you are spending a billion, you won't care about 30 more million as a fine. This is what happened with City at CAS also. They Hmm. had a 70 million fine, got reduced to 30 million. They're like, fine. And that's what Chelsea were also gambling on, the fact that they will swallow a fine as a cost of business. But now deduction is a serious thing. And if Chelsea Revenue don't कम हो comply, जाएगा. I think Chelsea will get a 4 to 6 point deduction as well. भाई that's crazy भाई. And If they don't interesting manage to sell. conversation. Hmm. कल भी ये बात हो रही थी ट्विटर पे about रहीम स्टर्लिंग. What do you think about him? क्योंकि लोग बहुत बोलते हैं like although मैं उसमें नहीं बैठता like about his missing chances है ये सब. Hmm. Just for perspective, रहीम स्टर्लिंग का पहला season if I'm not wrong the year where when he won the Golden Boy he scored 15 Hmm. goals. Mm-hmm. That's like his floor. Straight Mm-hmm. off the bat आता है प्रीमियर लीग में scores 15 goals. Hmm. Hazard का बेस्ट सीजन इज लाइक 15 गोल्स. Hmm. मेरे को कई बार लगता है लोगों की एक्सपेक्टेशन लाइक वो मिसेस ऐसे बनते हैं कि भाई क्योंकि वो आता है वो इतनी पोजीशंस में आ रहा है दैट्स व्हाई ही मिसेस लाइक समझ लो लाइक Yeah. कि एंड ऑब्वियसली एवरीबॉडी हैज बैड गेम्स वगैरह देखो जैसे मिस्टर सिड एफसी स्टर्लिंग इज द मोस्ट ओवररेटेड प्लेयर इन द प्रीमियर लीग. ब्रो ही इज द बेस्ट विंगर इन द प्रीमियर लीग अभी भी कह रहा हूँ. लाइक इफ यू पुट हिम बैक इन सिटी ही इज द बेस्ट विंगर इन द प्रीमियर लीग. मतलब साला हटा दो आप. Sterling has 339 appearances, 31st most appearances of City at 339. Um, he is 11th highest goal scorer for City. 11th highest. And how old is Sterling right now? आई थिंक 27 28 समथिंग लाइक He's दैट. 29. And like I'm not saying कि like he's now the best winger in the league. कौन होगा अभी अभी तो if नहीं not है. Sterling? साला Salah for sure, for साला sure. साका. Hmm. Salah, Son, all these guys. But that's the thing, man. No, for me, mm-mm. He's. I think recent form has invited a lot of disrespect towards him, but he is honestly will go down as one of the best Premier League wingers. By 18, pe he broke into Liverpool, then left for City, dominated in City as a winger. Ab, yaar, Chelsea mein he is not doing, but I think Chelsea in as an environment right now is not वही चेल्सी amazing. में कौन अच्छा कर रहा है कोई भी नहीं अच्छा कर Yeah, रहा. man, like Cole Palmer is an anomaly in Chelsea. Jackson is अरे slowly finding एग्जाम्पल his था feet. भाई. Huh. बंदे एकदम कोट कर रहे हैं वर्ड फॉर वर्ड. भाई मैं मजाक कर रहा हूँ भाई मतलब इट्स अ You don't know the rules of the internet, man. You don't know the सही rules of में the भाई internet. कुछ भी कुछ हो जाता है यहाँ पे. It's not the amount of chances he misses, but what about the kind of like literal sitters? I think वही वाली चीज है. Like Haaland भी miss करते हैं sitters. Haaland misses more Haaland than versus Chelsea, he missed, I Sterling. think, 4 or 5 headers he missed, which he should have scored. But वही. come on, man. Like people have a little bit knee jerky reaction. Like his free kick right now is being overblown, but people forget he took an amazing free kick earlier this season only. Same technique. I think this one was just terrible, absolutely हम्म. terrible. But वो तो वो थोड़ा सा हो वो जाता है. funny थी भाई. I remember when Haaland was not scoring as much as he did in the last season, in the earlier part of the season. People were saying, I would bench Haaland and make Alvarez a primary number 9, not realizing what Haaland really, really does for a team. भाई He's मुझको like याद है a सीजन magnet for स्टार्ट में two तो defenders, man. ट्रू ट्रू. और ऊपर से सीजन स्टार्ट में तो पेप वाज डूइंग ऑल ऑफ दैट लाइक वो इतने सारे सेंट्रल प्लेयर्स डाल रखे थे. Hmm. फोर्डन, अल्वारेज, हालांड, ये क्या नाम Hmm. है डिब्रायना वगैरह जब फिट थे ये बंदे. Hmm. अब काफी डिफरेंट खेल रहा है बट Arre, आई Dark लाइक. Knight is here. I haven't seen this guy in so long. Darwin is Arre, the most so insecure love this voice so much. bro. I Man love this out here voice so on much. that hate grind. Yeah, he is. He's a
respect to him, man. He's relentless in his hating, bhai. Matlab, that is, हम कह रहे थे ना, grind set. This is Grinds. hating grind set, bhai. कोई नहीं, Uh, मिस्टर डार्क नाइट, हैव यू एवर थॉट अबाउट लविंग समबडी नहीं, it's आउट okay. ऑफ नो रीजन? I saw him यू and I was हैव नो like, एनिमीज damn, भाई. damn. Anyways, हाँ, बोलो बोलो. बट मतलब वैसे डार्क नाइट, दिस कमेंट इटसेल्फ बिकम्स मच इजियर टू रीड अगर वो स्टार्टिंग की डिसरिस्पेक्ट ना हो, बट कोई नहीं. एनीवेज, कोई नहीं. एवरीबॉडी हैज देयर टेस्ट. चौंकी तू ले लेगा स्टर्लिंग को बारसा में विदाउट अ शैडो ऑफ अ डाउट. गेट रिड ऑफ योर पेनिस मैन. अरे, bro, come on, रहीम bruh, स्टर्लिंग. bruh. भाई मिस्टर नहीं गया न्यू नोस अच्छा, पर राशवर्ड डिसरिस्पेक्ट है ऑल दो, तो मैं Yeah, आई वोंट एड्रेस इट. बट इंटरेस्टिंग टॉक. हम मेरे को जिस बारे में बात करनी है मिस्टर yeah. दक्ष, Let's go. क्वार्टर फाइनल ऑफ द चैंपियंस लीग, पीएसजी पारी वर्सेस बार्सिलोना. भाई यू आर टॉकिंग अबाउट बार्सिलोना जो नई घसी थी भाई. मेरे को भाई आई एम फीलिंग इट, पता है मेरे को मजाक नहीं आ रहा. कल का जो Hmm. गेम था, इट वाज सो गुड फ्रॉम बार्सिलोना, इतना डोमिनेट. इट वाज सो गुड. Yesterday's game, na? लेवेंडोस्की, Yeah. भाई लेवेंडोस्की भाई उसको अकेले, इट्स Oof. अ डिफरेंट गेम. व्हेन ही इज ऑन सॉन्ग इट्स लाइक यू आर नॉट अगेंस्ट एनीवन. तो भाई Hmm. आर यू, क्या आप देख पा रहे हो स्टोरी राइटिंग? आर यू एबल टू स्क्रिप्ट? आर यू एबल टू रीड इट एज आई एम? I think he'll peak. He's peaking. He's at least regaining form at the right time, man. भाई What क्रंच टाइम वाला एकदम. what's his goal contribution? I don't know how factual this is. I saw somebody saying that his goal contributions are now in the highest in La Liga because he's assisted a lot and scored a lot in the last few games. But पता he's नहीं. he's coming back at the right time, and you need a lethal striker, man. Because you guys create a bunch of chances, man, through your midfield. You have Gundo who does that. For me, and you have your Cancelos. Although the thing was, Barca wasn't just finishing chances, and now this guy is 21 GA, right? Amazing, 21 amazing. गोल असिस्ट. Bhai, so yeah, he's tied with Bellingham now. So yeah, dude, he's peaking at the right time. And against PSG, man, this is what you need. Look, PSG came out of a group of death. Second, Dortmund beat them out purely because other teams finished their chances. And that is why they lost the games they lost in that group of death. And this is what you need from Barca as well, man. It is it could be possible, man, but you're also against one of the best players in the world on वही the एक other इशू है side. भाई. एम्बाप्पे ना होता ना, मैं मजाक नहीं कर रहा. That is the only. It's सीना not even चौड़ा करके Mbappe देता. only, dude. There are so many. They are very underrated players. Like squad as a squad that they're building. Maybe this year again, it's not going to be enough. But dhire dhire, man. Bradley Barcola, Zaire Emery, Javi Simons next time. ट्रू. Building a damn nice squad, man. They just have to sort उनकी out तो their स्क्वाड defense. देते ऑफ And if they कोर्स. get Lenny Euro, that defense is sorted. It's sorted, man. भाई उनको ये फायदा है भाई, दे आर इन द लाइक टैलेंट हब ऑफ द वर्ल्ड करंटली. लाइक सबसे ज्यादा जितना टैलेंट बन रहा है फ्रांस में, उतना It कहीं और नहीं बन रहा. तो वो एक उनको बहुत भयंकर एडवांटेज है. उनकी अकेडमी भी अच्छी है. there is पर मेरे को पता है. I don't think there is a city in the world with one dominant, like a capital city in the world with one dominant team. Paris mein there is Paris FC and PSG. London has so many big clubs. हम्म. Madrid in Spain have so many big clubs. Even हम्म. Berlin, Munich, all these major cities have multiple clubs that you have competing. Paris is the only big club in Paris, and that's insane to think about. भाई आई विल लव इट एंड आई थिंक आई डिजर्व भाई. आई थिंक आई डिजर्व. प्रथम step. अभी take all international break पे injury news with a grain of salt, man. A lot of these guys are just ना saving भाई मिस्टर themselves. दक्ष, यू आर जस्ट कोपिंग. About Gabriel, no, to be fair, he ही did इज get डन. injured during Porto, but now KDB इसको is withdrawn. Nunes has withdrawn. Tommy Asu, Partey, all these guys have started withdrawing, man. It is that Rashford mentality, भाई सारे clubs कर रहे बुल मेंटालिटी. हैं. भाई पता है मेरे को एक इंटरेस्टिंग चीज लगती थी. आपने ट्वीट भी किया था अबाउट कि लुइस एनरिके नोस बारसा Inside out. और कल्चर, और फिर वो वहां कर रहा है. पर मेरे को लगता है दिस इज वेयर, जो अब वो वाली चीज है, दिस इज वेयर बारसा हैज लॉस्ट काउंटलेस नंबर ऑफ मैचेस, और स्पेशली चैंपियंस लीग में. Hmm.
क्योंकि हम थे ऐसे सॉर्ट ऑफ एक आइडियलिस्टिक अप्रोच रही थी फॉर मेनी इयर्स, एंड एटलीस्ट यू कुड से दैट, मतलब कुछ लेवल पे कि मतलब थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी कम थी इन टर्म्स ऑफ व्हाट वी नीडेड टू सक्सीड एंड व्हाट वी Hmm. एडमायर्ड। तो उस सेंस में वी weren't एबल टू सक्सीड चैंपियंस लीग में बहुत सालों तक। आई थिंक ऑब्वियसली एक तो एनरिके की टीम नहीं कह रहा मैं, क्योंकि जो पीएसजी इज बिल्ट लाइक अ सुपर टीम, तो वो तो जीत सकते, दे ऑफ कोर्स कैन विन चैंपियंस लीग, क्योंकि यू डोंट नीड Hmm. मच टू विन चैंपियंस लीग। मतलब तुम्हें ट्रांजिशन पे थ्रेट अच्छा होना चाहिए, एंड यू नीड टू बी हैव प्लेयर्स दैट कैन विन डुअल्स, इंडिविजुअल डुअल्स। दे हैव ऑल ऑफ दैट, हर तरह का उनके पास कॉम्बिनेशन। द थिंग इज कि मैं आई नो लुइस एनरिके ना, ही डजंट वांट टू विन जस्ट बाय दिस। he wants to do that, डेम्बेले को इनसाइड करना है उसको, उसको करना है वो, he wants to do that good football thing, समझ रहे हो? he needs it, Hmm. although Enrique is no like गधा तो नहीं, obviously वो इतना एक्सपीरियंस है, इतने साल उसने कोच किया, पर उस I know him भाई, he's not that guy, he's not a शावी। शावी इस मामले में ना वो है, थोड़ा गलीज, क्या कहूँ, Pragmatic. गंदा। He's not pragmatic. हाँ, He's a pragmatic romantic. ज्यादा। एग्जैक्टली लुइस, मैं इस चीज पे बैंक कर रहा हूँ, that when we pull up to Paris, they have not seen a Spanish low block like this one. मैं मजाक नहीं कर रहा, pull it out from Diego Simeone's book, और this is the way to win भाई, you play the first leg भयंकर pragmatic, like City played against Madrid last season। उन्होंने ऐसे लो ब्लॉक नहीं किया था, पर उन्होंने बॉल रखी, कुछ नहीं क्रिएट किया, बस पोजीशन चलाते रहे, बोर कर दिया, गेम निकाल दिया पूरा। दिस इज व्हाट यू नीड टू डू इन पेरिस, एंड आई थिंक यू हैव अ अच्छा खासा शो, यू कैन विन। Look, man, the thing is with this, right? When people refer to Mbappe, ठीक है अभी उसने what he made a hat trick and everything. Sure, fair enough, हाँ। man. The thing is, the greatness of that guy is, bhai, just go back to that France versus Argentina World Cup final, man. Single-handedly, he took that team into extra time and pens and all that crap. He willed it. He willed it. And I don't know how much is his will this time for the Champions League and everything, but that's the thing. He is such an There is a very nice Henrique analysis on Kylian Mbappe, on how he dribbles, on how he even looks at the step that the defender is taking against him. उसको पता है कि डिफेंडर जब अपने ऑफ फुट पे जाता है तब मेरे को एक्सेलरेट करना है या नहीं करना है, और व्हेन ही इज ऑन हिज स्ट्रॉन्गर फुट and when he has to change directions with his weaker foot or whatever, he is a cold-blooded killer. Can Barca stop them? Kunde and Kubarsi on that side, Kunde and Araujo on that side is good for them, 100%, 100%. But मैं वही कह रहा हूँ यार, Enrique, you're right. Romantic, wants that beautiful football, would probably try to create that perfect goal. Mbappe can just be like, give me this game by man by the neck हाँ and भाई, let's ट्रू do ट्रू, it भाई. वो बोलता है भाड़ में जा वो तेरा तो आई एग्री। प्यार भाई, let me score and that's it. It doesn't even have to be a build up thing, man. One misplaced pass to him, one deflected ball to him and he's through. Because who catches him? Who catches him in a sprint race? Who catches him when he's through? Who catches him when he has eyes for goal? Ter Stegen will be super important, by the way. He भाई is in नहीं his होगा, form of पता है fitness. ter स्टेगन की वीकनेस लो शॉट्स नियर पोस्ट, और एम्बापे का फेवरेट शॉट है वो जो फेक करता है कि फार पोस्ट जाएगा और फिर नियर पोस्ट जाता Opens है। up his आई नो body ter and buries स्टेगन it. इज Bhai. स्ट्रिपिंग, आई नो कि एक ऐसा एक स्ट्रिपिंग मोमेंट आने वाला है फॉर श्योर, एक एक ना एक गोल तो खाएंगे भाई। But jokes बट aside, I think you guys can do it. I फॉर think you श्योर you मेरे को तो guys have. लाइक कॉन्फिडेंस है इस बार। मेरे को भी आया. I before और even the पता है, Napoli second leg, I said I would put money on Barca to win this in regular time over Arsenal. I'm still telling you, I think you might even sneak a win in Paris. I think you भाई can. वी विल बी देयर चैट, यू नो भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं वॉच अलोंग कर दूंगा भाई। 10 Yeah. 10th अप्रैल, यू कैन पुट इट लोग ऑन भी योर शुरू हो कॉल, गए मैं वॉच अलोंग कर टेस्ट दूंगा। टेस्ट स्टैंडिंग भाई. देयर स्टार्ट, भाई वो हो डिसरिस्पेक्ट जाएगा, है. वो उसका है। पर द नियर रिमाइंड्स मी ऑफ एंटनी ने। See, this क्या is हो this रहा है भाई, ये this चैट is बटन। why, man. This is why United fans, man. भाई अमन इज अ बायर्न फैन भाई। Aman is a United fan with the Bayern DP as अच्छा well. इज अ, He's a अबे भाई, Aman. Aman loves United.
What was that, भाई? What a comment. भाई मजा आ गया. Exactly भाई 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 भाई. For a moment I thought कुछ गड़बड़ है. कर दिया अगर पता नहीं किसके चैनल पे अरे यार रहते वो हो. तो बस इम्प्रॉम्प्टू मैन। मेरे को थोड़ा-सा और करने का मन कर गया था प्रोक्रेस्टिनेट। सो आई वाज़ लाइक व्हाई नॉट स्पेंड माय वैल्यूएबल टाइम विद द मोस्ट एमवीपी ऑफ यूट्यूब कम्युनिटी मैन। लम्हा भाई ये इतना वियर्ड है क्योंकि ये मेरे को लाइक यश भी ऐसा लाइक यश ने शायद बोला था, पता नहीं किसने, कोई बोल रहा था कि यू आर द यूट्यूबर फॉर द यूट्यूबर्स. वो कह रहा था कि द पीपल्स लाइक यूट्यूबर। इतना. हाँ ऐसा था कि यूट्यूबर तेरे देता, बट इट वाज फनी. पर मेरे को एक और चीज इंटरेस्टिंग लगी थी कल के हुँ, मैच में. एंड दैट वाज, और मैं चाहता हूँ अब देखो वी आर नो वे बारसा विंस द लीग, लाइक कितना 7-8 पॉइंट का डिफरेंस है. और हुँ, मतलब एक आध मान लो मैड्रिड हारती भी है हुँ, तो हम भी सारे जीतने तो वाले नहीं. लाइक देयर इज नो पॉइंट, कुछ चांस ही नहीं है ला लीगा में. क्योंकि दैट मैन गुंडोगान, ही इज द हुँ। बेस्ट मिडफील्डर इन द वर्ल्ड. मैं मजाक भी नहीं कर रहा. ही I स्टिल. I I heard a podcast today, by the way. It's by City's most reliable journalist, and he said today that Gundogan wants to go back to City. Won't be possible, but he misses नो City. वे. He ये बोले. it won't happen, but he genuinely misses City. That's what he said. आई It's by Sam Lee on the LTM podcast called Let Me Talk podcast. चैट, वी नो हु वी हैव टू अब्यूज नाउ. सैम ली. Corner full of his. Sam Lee, yeah. FCB Kimmich knows why. FCB Kimmich knows. It's Sam Lee. I don't know. I think he's enjoying. भाई he's playing like no. भाई he's. Are you kidding me? जैसे वो खेल रहा है. How does this look like a man who wants to leave? No, This looks like a I'm man not who saying he knows wants to leave. I'm shit. saying he misses City. That's the exact verbatim I'm saying. He misses Manchester City. It won't happen. It's likely not going to happen because वो age हो गया है and everything and all that crap and City is not going to offer him. But Hmm. it's not even a move that he regrets. He just misses Man City was the actual quote. Sam Lee MKC. I don't Yes, like the Sam sound Lee, of that. man. I don't Sam know. Lee. It was actually a really good podcast though about City recruitment. It was a very good podcast. भेज ये मेरे को कौन सा एक सेकंड. लेट मी. It's called Let Me Talk podcast. अच्छा लेट मी टॉक. ओके ओके. पढ़ना पड़ेगा. But it's रिक्रूटमेंट a इज ऑल्सो. members thing. Yeah, yeah, अच्छा. Let Me Talk is not free. Let Me Talk is not free. It's the only pod, yeah, I subscribe to paid. हाँ सही में. Is it But that not good? the only one. I actually now yes. Now yes. I subscribe mostly to written pieces now on Substack. Hmm. But LMT is damn nice. अध्यक्ष अब बस अपना कॉन्फिडेंस गिराने के लिए मस्ती कर रहा है. मेरा रिक्वेस्ट है इस पॉइंट में उसको इग्नोर किया जाए. क्यों है, यार ऐसा क्यों है Mbappe भाई? man, it's Mbappe dude. That's not confidence man. It's facts. With Mbappe it's facts. अच्छा उसके लिए. It's ऑफ the thing कोर्स is भाई. there are some players with an inevitable gene, okay, and Mbappe has the biggest inevitable gene. You just know in big games he will be there, and I think now I want to drag Arsenal into this. This is what we miss: inevitability. Aega, aega. I think I saw a spark of it during Brentford, but somebody needs to have that Havertz. inevitability gene. What about Havertz? Nah, man. He is a confident. Havertz is a confidence player. Havertz, the second he has to make a decision, he fluffs it. That's his only weakness. Inevitability mein bhai, you're through and it's done. It's over. It's over. अच्छा वैसे दिस इज अ बहुत वैसा क्वेश्चन. Hmm. अगेंस्ट एम्बापे, क्योंकि एम्बापे वो विंग वाला लेगा. वुड यू प्ले अराउहो राइट बैक और वुड यू प्ले कुंडे राइट बैक? Kunde. सो यू वुड हैव कुंडे go direct 1v1s with Mbappe and Alright, Araujo be the. both of them try to stop him. You beat भाई one, there is another one piche. that's You can't. cuck talk भाई. No, bro. That's not cucked. Bruh, yeah, लाइक this कि भाई ठीक है. मेरे को पता है वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई लाइक Araujo on right back is कि भाई चल Vinicius, he has already dealt with a guy like he'll get a Vinicius. yellow, he'll be suspended. अच्छा हाँ ये इशू है. शिट I forgot about this. That I don't know Araujo if must Barca has a make it to the second leg. Araujo suspension, but he'll take two yellows over two legs. Bhai, he Hmm. will. Mbappe will. I'm not saying. Bhai, Araujo is one of my favorite defenders at Barca. But if you make him 1v1 versus Mbappe,
You remember that PK Mbappe wala snapshot where Mbappe is like हाँ. running like this and PK is holding on? We will recreate that, Come man. on, भाई. Araujo is one of the quickest center backs out It's there. not about Quickest speed, defender. it's about acceleration. अब आपने ना मेरी वैसे तो देखो कर देगा, वैसे मेरे को पता है लाइक एम्बापे ना लाइक ही विल ईट, आई नो फॉर वो एक गोल तो मार रहा है, लाइक आई हैव नो डाउट अबाउट इट. I पर think you can. I'll tell you this though. You don't need the quickest defender. You need a strong defender. So I understand the merit in that Araujo talk also because Dan Burn kept him quiet. Okay, bloody Dan Burn and Newcastle kept him quiet in the first game in the हम्म, Champions League. So it's not usually about the speed. You need somebody who is pacey, who's great at anticipation. I still think Kunde though. आर्सेनल गए, मैन यूनाइटेड वर्सेस आर्सेनल. Man United versus Arsenal. Bhai, I said it. I've been saying it for 2 weeks. Old Trafford, second last game week will be the toughest game, one of the toughest apart from Spurs maybe. Because bhai, did you see Eric Ten Hag's interview post game? हाँ, उसने कुछ ही वेंट फुल स्मोक. ही वांट्स ऑल द स्मोक भाई. Bhai, he said, ठीक है, the guy has beaten his biggest rival in the FA Cup to reach the semis. He's beaten them on a last minute winner. He has हम्म. pretty much saved his job. Uske baad he said, he brought up Arsenal in response to a question about can this be a turning point for the season, and then he said yes earlier in the season. Bro, that was game week 4. We're in game week 29. 25 weeks का wound है उसके पास भाई, घाव है बंदा. He is hurt and I'm ऐसा. telling you he will obsessively prepare for that game. He has this eye on that game because he feels, and I think a lot of United fans actually also feel that their season actually turned niche because from 1 minute ka euphoria of winning with their Garnacho scoring against us to losing 3-1 in that game. So I हम्म. don't know, man. Like, it could be a good thing for him to obsessively prepare for that game. We could also just be rent free and absolutely smash them. But they have so many motivations for that game. It's the second last game week. Ha, yes. See, cheat refereeing. See, I'm telling you, man. We're in their head. Uh, And so 37th game week is the second last game week. If the league is not decided by then, we could be winning it at Old Trafford if you're still in the hunt. That is हम्म. something they want to avoid. If it is already decided and somehow we've already secured the title, How? I don't think so. It can be decided. I think no, it no, it will go won't be. till. But if it is, then they are giving us the guard of honor. They have plenty of things to avoid, man. To अच्छा, like ये सब they भी will है भाई. वो bhai, देंगे there's a नहीं. huge psychological element to this game. So गार्ड yeah, ऑफ ऑनर तो आई डाउट क्यों देंगे. kya? राइवलरी में आई डोंट थिंक सो गार्ड ऑफ ऑनर देंगे. We gave it to Van Persie and Man United, man. देंगे ये लोग. Anyways, हम्म. but Old Trafford is going to be our toughest game away. I said this. I've said this before this FA Cup win, man. And a lot of people were laughing कि क्या मैन यूनाइटेड को देखो शेफील्ड से ये था उनका ऐसा वो था भाई नहीं ओल्ड ट्रैफर्ड पे यूनाइटेड इज डिफरेंट ग्रेवी मैन बिकॉज यू नॉट जस्ट ट्रू. trying to outplay a team on the pitch, you're trying to also block out 60k people shouting murder at your face bhai. It takes a lot. It डू takes यू a lot. थिंक वो भी होता है इसमें ऐसे लाइक मैनेजर्स की प्राइड? डू यू थिंक टेन हाग और आर्टेटा विल हैव दिस थिंग लाइक इन जनरल, लाइक यंग मैनेजर्स की, हम सेम लीग में मैनेज कर रहे हैं, वी वर लाइक सेम टाइम पे ऐसे टीम ने आप पकड़ना शुरू किया था और दे विल बी लाइक आई कैन बीट दिस गाय, आई विल बीट दिस गाय, इसकी टीम I है. think Ten Hag definitely has that competitive streak about him. I think Arteta does as well. हम्म. Arteta is also a very vengeful person who was publicly बोलता नहीं है, but if you hear the team after some games, if you watch his All or Nothing, he keeps these things ready, man. जब टोनी ने ट्वीट किया था नाइस किक अबाउट द बॉयज व्हेन दे बीट अस, he kept it for his team talk. हम्म. When we beat Newcastle this season 4-1, all the players said कि we had the game जो पिछला हुआ था 1-0 हम हारे थे रेफरिंग की वजह से, we had this in our mind and stuff like that. So he definitely uses it as motivation. A sense of injustice हमारी टीम को fuel करता है, which I'm not too big a fan of. It's okay for a formative team, but we now slowly need to phase it out.
वो थोड़ा um मोरिनियो वाली चीज है, अस अगेंस्ट द वर्ल्ड और ऐसे इनजस्टिस उसके अगेंस्ट मे है ना। आई नो बट वही है कि लाइक आई थिंक एक्सटर्नल स्टिमुलस ना एक बड़ी अनरिलायबल चीज होती है भाई, लाइक ट्रू ट्रू ट्रू। because external stimulus can run out anytime. What happens when you have to now beat City and there is no external stimulus? How do you conjure it up from within yourself? वही आई मुझे थिंक सबसे वन ऑफ लगता द रीजंस व्हाई सिटी इज सो गुड इज, और पेप इज सो गुड इज, कि भाई उसकी व्हाट एक्सटर्नल है ब्रो डू दे हैव, एग्जैक्टली लाइक कुछ भी नहीं। भाई दे विन एवरी ईयर, दे विन एवरी ईयर, फिर भी भाई फिर भी करते रहते हैं। yeah so तो वो with Ten Hag though इंटरेस्टिंग। Ten Hag is also compared but I think I have a feeling he won't stay next season. वो owners will kick him out. टेन हाग, भाई भाई they've मिस्टर replaced अनिकेत pretty वोंट much लाइक इट। everyone. They've replaced everyone at the club. The sporting directors, the chief भाई executives. शिट मैं ये भूल गया था, Huh? Why वो would इतना they? यंग है नहीं, मैं भूल गया था। हाँ yeah he's actually had a long career but वही है यार मतलब they have to give 250 million for a rebuild. Why will they give it to somebody they don't 100% trust? I think he should be given time. I am very pessimistic he will be given time. द ओनली, मेरे हिसाब से द सेंस ऐसे बनता है लाइक कि टेन हाग ऑल्दो ही हैज शोन, लाइक लास्ट सीजन तो जेन्युइनली पॉजिटिव था, आई डोंट थिंक सो लास्ट सीजन कोई कंप्लेंट कर सकता है। पर आई थिंक अगर तुम देखोगे कि भाई अच्छा, टूखल भी फ्री हो सकता है, फ्लिक भी फ्री है, नागल्समैन भी फ्री है, That's the thing man. बहुत अच्छे अच्छे मैनेजर्स फ्री हैं, तो दे माइट थिंक, वरना आई एग्री भाई, इट डजंट मेक मच सेंस टू किक हिम आउट। The scouts are chunky. Just a massive fan who opened YouTube, see what low cost internet is costing this season. But technically correct. I think that's how it happened. ऐसे उससे पहले भाई यार, अगेन दिस इज द scouts are unscripted. Check out the channel. पता है मैं कितने साल से बना रहा हूँ ये कंटेंट? Check out the very first podcast I've done on this channel. If you want to check out football again, but कोई नहीं. How confident? अरे हाँ, Bayern versus Arsenal. This is also one of the best ties. But I think will Bayern is my favorite for this tie. Same. I think Or Bayern one of the slightly edges up. सबसे simple reason is experience. Like this is their first time in Europe, Arsenal after Hmm. 14 years. Bayern have been here इतनी बार, और ऊपर से सारे players भाई, इतने सारे players इतना खेले इनके। I think वो They against have Porto भी मुझे लगा Arteta was थोड़ा naive. I remember 60th minute पे hmm. second leg में Arteta made no changes. Hmm. शायद या एक चेंज किया था, मेरे कुछ ऐसा याद है। और मैं सोच रहा था भाई तू 1-0, दैट वाज 1-0 तब तक, भाई यू मेक चेंजेस नाउ, यू गेट समथिंग आउट, मतलब अभी तो यू हैव 30 मिनट्स टू प्ले। पर वो मेरे को Hmm. लगा थोड़ा ऐसा था भाई, डरा हुआ आर्टेटा भी, वाज लाइक कि अब आई डोंट नो क्या अभी Possible, नेक्स्ट man. डिसीजन क्या सही है, Yeah, yeah. वो There वाली is चीज थी। definitely an element of inexperience and naivety there. My only justification for him not making subs is that he stopped looking the game as a 90-minute game and he started looking it as a 120-minute game. So even in a 120-minute game, if you make subs at 80 minutes, you still give 40 minutes to players, which is basically an entire half. So that is my हम्म। only thinking कि उसने इसलिए नहीं करा था. If you change at 60 minutes, you're giving a 60 minutes, which fair enough, man. But I think he wanted to stick with those crowds because it was the last game for what 19 days. So he wanted to extract all that juice. For Bayern, I like I said, I think Bayern are favorites going into this. And I think they have the perfect toolkit to like completely neutralize us. PC wingers against हम्म। defenders who might not be the greatest 1v1s. Clinical finishers, one chance, one goal in Harry Kane. Physical and technical midfielders, Musiala, Pavlovic, Goretzka, if Kimmich plays in midfield, sure, whatever. Sasha Boy as an underrated defender. A lot of people don't rate Sasha Boy. Sasha Boy as a right साशा भाई back, तो left. इंजर्ड, आई थिंक ही He'll be. वोंट, I मेरे हिसाब से let's नहीं see होगा। if he's back or not. But him against Martinelli will अभी तो not be a good आ रहे match. हैं, Sasha for Boy can sure। defend with his left and right both, and that is the हाँ worst साशा भाई thing. तो प्रॉपर राइट बैक है, ही इज लाइक प्रॉपर Yeah, टू वे you can बंदा play him at left or right. He will defend with both है भाई feet, भाई। and that is the worst thing that can happen to Martinelli. Somebody who's great on both feet. Um, Kim Min Jae, fast. Delict, strong. Neuer, Alfonso Davies versus Saka. They can physically. भाई PNP पे they can. तो I hate like हाँ buzzwords वापस invoke करके I don't like it, but PNP पे they can match भाई, us and यूजेनिक्स। outmatch us भाई.
Have you seen Pavlovich? Bhai, the हम्म, हाँ kid is literally भयंकर daddy long legs, man. भाई। He can stop anybody. And Musiala versus Rice, हाँ, crazy in the channels. वो I want मूसियाला तो Partey भाई मैं fit for बोल this नहीं one. सकता। ही इज अ बैलन डोर, मजाक नहीं कर रहा, ही इज अ बैल, ही Oh, इज 100%. क्रेजी, ही इज क्रेजी भाई। मैं इस For जनरेशन में, लाइक for पीपल me, थोड़ा शिट एट मी फॉर दिस, बोल. नेमार एंड मेसी, कोई वो जो बॉल मैनिपुलेशन और वो हैंडलिंग उसका कुछ है ना, तो वो दिस इज द गाय, लाइक Yeah, भाई ही इज रिडिकुलस। मुझे वही लग रहा है. I think we'll put in this game, in this fixture, if we have 100% sharp Partey, maybe we'll play a different way. Maybe तो we'll play यू how विल we प्ले play against City. बोथ पार्टे, ओ भाई मेरे को लग रहा है पार्टे, जॉर्जिनियो और राइस भी खिला देगा भाई, मजाक नहीं कर रहा। It'll be Odegaard. We'll play our अच्छा community shield ओडेगार्ड तो lineup. खेलेगा। Odegaard, हम्म। Rice and Partey. Partey at the 6. डेक्लेन को बस बोल देगा तू बस पीछा कर मूसियाला का. That's it. Um, and ये part कंजर्वेटिव आइडिया, पर दिस इज अ वेरी कंजर्वेटिव टीम मेरे हिसाब से। he is the only dynamic player by who can. By nobody on the left eight is matching. Trossard can't do it. Havertz can't do it. Fabio Vieira won't do it. There is nobody at left eight apart from Declan Rice who will be pushing with Musiala. There is otherwise we're just giving him all the space and time in the world. Not possible. You will have to play Declan Rice as an 8. अब 6 पे Jorginho खेलता है या Partey is a completely different thing. For Kane, we will handle Kane. We know how to handle Kane. We've been handling him. देख यार, he scored 14 goals against Arsenal. Completely agreed. But in the last Yeah. 3 North London derbies, Gabriel has just been on him, on him, on him, on him. So let's see, bro. Let's see. राइस गेटिंग फ्लैशबैक्स भाई, राई भाई मूसियाला तो भैया, ऑल्दो भाई ऑनेस्टली ही विल बी द वन, अगर कुछ होएगा तो मैं आई एक्सपेक्ट, लाइक, और आफ्टर उसका ये सीजन अच्छा भी नहीं गया ऑनेस्टली, उसका ये सीजन अच्छा नहीं गया बिल्कुल भी। मूसियाला Hmm. का लास्ट सीजन ही वाज द बेस्ट प्लेयर इन बुंडेसलीगा, Hmm. बेस्ट प्लेयर बायर्न का, हाँ, प्रथम ने एक दैट बार वो एज अ बताया था कि टीनेजर। Kane might miss the first leg. I don't know. And I don't know who plays number 9 then. Who's it? Chupomoting? Who's at Bayern number 9? चूपो मोटिंग ही खेलेगा। Yeah. It's not all. That's also not a. I know लोग मजाक उड़ाते हैं भाई. But he's also नहीं, not बट a. चूपो मोटिंग हैज थोड़े ऐसे क्लाउन गोल्स, मतलब ही सम लाइक Tell will be there, 3 गोल आ man. गए उसके। Bloody Tell is there, man. I hate the Well, is guy there, but so ये much. वो Tuchel doesn't give them I much am just chances. hoping it's literally just Arteta Juju against Tuchel na chal jaye bas. Because Tuchel has had a terrible record against Arteta. And I'm hoping with a better squad that continues. But let's see, bro. Let's see क्या होता है. Let's see. Because they have a very technical group of players and a very physical group of players. And like you said, भाई सबसे important experience, man. They know how to do it. हम I वो just मेरे मेरे को को सबसे बड़ा डर आर्सेनल का ये लगता है. We'll end up playing the occasion rather than match. It's a very cliched thing to say. But सेकंड लेग in का। second leg is at Allianz. First leg पे भाई we have to get 2 goals. 2 goal lead at हाँ, least. अब थोड़ा मुश्किल है, बट Yeah. इंटरेस्टिंग मैच होगा। चलो बिफोर वी एंड द स्ट्रीम, एक घंटे से स्ट्रीम करे चैट, लाइक द Hmm. स्ट्रीम इफ यू हैवंट, चेक आउट ए फॉर आर्सेनल, मिस्टर दक्ष streams there regularly, puts videos there regularly, or भाई do check him out, check out this channel. Before we move, Mr. Hmm. Daksh, Hmm. who do you have winning the Champions League? I want to say the I want to say the good words, Mr. Daksh. Give me that sweet whisper. I'm not joking. And they say you shouldn't tell your dreams, but I will risk it, man. I envisioned an Arsenal PSG final in my dreams, and I saw us lifting it. Disgrace. Get this man out of here. Nah, nah, nah. I'll tell you. Disgrace, I'll my tell you. I'll chat. tell you jokes aside. I'll tell you jokes aside. I think it'll be a City Barca final. City or Barca? I think it'll be a City Barca final. My chat. I am having goosebumps. I am having all kinds of Yo, physical in the final, responses. anything can happen, man. City versus Barca, bhai, it'll With be crazy. I think our ceiling is till this point in the season, man. Genuinely, no jokes. I think Bayern is. Yeah, अगर starting कोई में था. I would have been happy with the quarterfinal appearance.
in our first season in 14 years, or 7 years in Champions League, 14 years in the quarters. Think this is too big a leap for us. If we get through somehow, brother, I am in La La Land. मतलब उसके बाद तो I am not stopping dreaming. But I think Bayern is भाई our limit. And even if Bayern को हमने cross कर लिया, man, we're not getting past City or Real Madrid. No way. No way. No way. No way. The squad is not. built for I it just yet. don't think the squad is up there right now. But क्योंकि Havertz है। I think you guys are peaking at the right time. You भाई are, मेरे को भी ये फीलिंग आ रही है ऑनेस्टली, जिससे है ना? आया मेरे को भी लग रहा There है is there दैट is इज something द cooking, man. I'm नैरेटिव। not even joking. There is something cooking. तो और वो दिख भी रहा है भाई, इट्स लाइक इंटेंसिटी में प्लेयर्स, इट लाइक शोस, थोड़े कॉन्फिडेंस में दिख रहा है। Post announcement, something has flipped, man. Like भाई something has चैट बारसा flipped, इज मिड, man. Post वी announcement, and नो you know what? He's not even going to turn around. He'll be like, मैं निकल रहा हूँ. He's not हाँ gonna यू turn around. नो। आई थिंक लोगों को लग रहा है मतलब वो एक केस है कि मोटिवेशन का, कि उसने लाइक थोड़ा सीन चेंज करने के लिए बोल दिया कि मैं निकल रहा हूँ, पर वो सिर्फ फॉर आई हैव नो डाउट वो निकलेगा तो फॉर श्योर, बट आई वोंट डिनाई कि उसके अनाउंसमेंट के बाद देर इज एक थोड़ा डायनामिक अलग, प्लेयर्स आर डूइंग समथिंग डिफरेंट नाउ। तो भाई वी आई एम वेटिंग भाई, आई यू नो व्हाट, वॉर वाज हियर बिफोर अस एंड आई एम रेडी टू सी वॉर भाई अगेन, पीएसजी विल बी कमिंग। थैंक्स अ लॉट चैट जुड़ने के लिए, चेक आउट ए फॉर आर्सेनल, चेक आउट चौंकी। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे।